উপাদে আছে। Well, we have Rahul Sinha joining us on the phone line. What do you make of this, Mr. Sinha? You know, first came the Panoti jibe by Rahul Gandhi. Now, Mamata Banerjee, referring to the Prime Minister as a papi, says wherever the sinner goes, the omen follows. Mr. Rahul Sinha, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बोलिए बोलिए जी, ममता बनर्जी सर अब आके बोल रही हैं कि जहां पे भी पापी जाते हैं वहां पे ऐसा ही होता है। एक नरेंद्र मोदी द प्रधानमंत्री उनके खिलाफ फिर से एक अटैक लॉन्च किया ममता बनर्जी। राहुल गांधी के बाद इट्स ममता बनर्जी सर। देखिए, ममता बनर्जी इन लोगों का सबका मुश्किल यही हुआ, वो मोदी जी को कुछ नहीं कर पा रहा है, ना मोदी जी का शासन लेके कुछ बोल पा रहा है, ना मोदी जी जो विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर दिया उसका संपर्क कुछ बोल सकता है। कोई विरोधिता का जगह नहीं है, इसीलिए खेल को सामने लाया। इतना जघन्य घटिया जो बात एक चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, ये हम लोग सोच नहीं सकते। इसीलिए पापी तो है ममता बनर्जी जो चोरों का समर्थक है, जो चोरों को शरण दे रहा है, और जो चोरों को पकड़ने का काम कर रहे हो तो पुण्यात्मा नरेंद्र दामोदर मोदी जी। इसीलिए नरेंद्र दामोदर मोदी देश का जनता का सामने पुण्यात्मा है और ममता बनर्जी बंगाल का जनता का सामने पापी है। नहीं, बट क्या आप सरप्राइज्ड हैं सर? क्या आप शॉक्ड हैं सिन्हा साहब? क्योंकि राहुल गांधी काफी कुछ बोलते आए हैं पहले, काफी विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि अगर ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच नहीं होता, वानखेड़े स्टेडियम में होता तो शायद जीत जाते। ममता बनर्जी अब भी वही कह रही है, और तो और ममता बनर्जी ये भी कह रही है जो सैफरन रंग है टीम इंडिया की जर्सी में उसको भी ब्लेम किया जाना चाहिए टीम इंडिया की लॉस के लिए फाइनल्स में। ऑलराइट, we seem to have lost that line with Mr. Sinha. We have Joy Prakash Majumdar of the TMC also joining us on the phone line. Mr. Majumdar, what do you make of this, and what's the logic behind Mamata Banerjee making that reference and, you know, hitting out of the Prime Minister in the manner in which she has? No, question is, Madam Mamata Banerjee has rightly pointed out the discrepancy about the BJP stand. When BJP tries to politicize cricket by naming Narendra Modi Stadium, a stadium funded by common people's money, and that stadium is named in the name of Narendra Modi, and when the BJP tries to change the jersey of Indian cricket, who are known across the world, but is the TMC then trying to make a score against the decision to name the stadium Narendra Modi Stadium? Why are we bringing in cricket in all of this, sir? All round they are trying to politicize cricket and other games, which has never done before, and that is why when in return they are receiving these comments, then they are reacting. If you react, then actually every action has Mr. Majumdar, can the saffron in the Team India's jersey, can the venue of the stadium have anything to do with the final result, sir? It's a very simple question. Result, it's a bad omen, she said. We believe, we Indians, when we talk about our tradition, the bad omens we must believe. It's in Mahabharata, it's in Ramayana, it's in Purana. Bad omen. Okay, so that bad omen, sir, is limited to the Narendra Modi Stadium because it's been named after the Prime Minister. It doesn't apply to any stadium in Kolkata, in Mumbai, or any other part of the country. Of Narendra Modi. No, Mr. Majumdar, you know why I'm trying to ask you this question is because time and again we've seen how, you know, cricket has been politicized, and in doing so we're also in a sense undermining the capabilities and the potential of our, you know, playing 11. The ones who played took on Australia in the final clash at the Narendra Modi Stadium. We also have Mr. IP Singh of the Samajwadi Party joining us on the phone line. IP Singh जी, आप क्या समझते हैं? ममता बनर्जी कह रही है कि प्रधानमंत्री एक सिनर है, उनके कारण जो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीते फाइनल्स में, ये सब उन्हीं की गलती है। देखिए, पूरा देश शॉक्ड था, और जिस तरह से पॉलिटिसाइज बीजेपी ने किया है, जिस तरह से गुजरातीकरण पूरे देश का किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से
देश में उनकी एक पहचान है। पटेल समाज अपनी अस्मिता से पटेल जी को जोड़कर देखता है। उतने बड़े स्टेडियम का नाम आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी कर दिया गया और पूरा देश जानता है कि 2011 में विश्व कप भारत वानखेड़े स्टेडियम में जीता था। ईडन गार्डन और वानखेड़े के बारे आईपी सिंह जी, क्या आप कह रहे हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल होता और नरेंद्र मोदी वहां पे भी शामिल होते तो नरेंद्र मोदी का जीत या हार से कोई लेना देना नहीं था? सर देखिए, पनौती जो शब्द उनसे चिपका है, ये वही प्रधानमंत्री है। जब पेट्रोल के दाम 2014 में इनके शपथ लेने के बाद कम हुए तो इन्होंने कहा कि मेरी भाग्य है, मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत से पेट्रोल के दाम कम हो गए। तो जब स्टेडियम में जिस तरह से आपके लिए माहौल बनाया गया, जिस तरह से दबाव में हमारे खिलाड़ी आए, कैसा दबाव आईपी सिंह जी, कैसा दबाव? जो टीम फाइनल से पहले 10 के 10 मैच जीती थी सर, और इसी स्टेडियम में उनमें से एक मैच खेला गया था शुरू में, वही टीम अगर फाइनल में हार गई तो सारी गलती नरेंद्र मोदी की है। सुन लीजिए, सुनिए, उसी में से एक मैच लखनऊ में खेला गया था जिस स्टेडियम को माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, वो भी इंडिया जीती थी। लो स्कोर था। पर अहमदाबाद का मैच भी जीती थी सर, अहमदाबाद का मैच भी जीती थी, सारे 10 मैचेस जीती थी। क्या मैसेज भेज रहे हैं आईपी सिंह जी हम, क्या मैसेज भेज रहे हैं पूरी दुनिया में? अपने क्रिकेटर्स की तारीफ करने की बजाय उनका उत्साह बढ़ाने की जगह सर हम ऐसी राजनीति खेल रहे हैं। ये तो क्रिकेट के जो जड़ है उसमें मट्ठा डालने का काम बीजेपी ने किया, अमित शाह और मोदी जी ने किया, उनके भतीजे जय शाह ने किया। जिस तरह से कॉमर्शलाइजेशन हुआ क्रिकेट का, क्रिकेट तो खत्म हो रहा है भारत से। ये तो मैं तो इस बात को कहता हूं कि मोदी जी की सर आईपी सिंह जी, अगर फाइनल जीत जाती इंडिया, क्या तब भी आप यही कहते? आईपी सिंह जी, अगर फाइनल जीत जाती इंडिया और तब भी नरेंद्र मोदी वहीं पे शामिल होते, तब भी नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में जाके उन सबको कांग्रेचुलेट करते, तब भी आप क्या यही कहते हैं? अरे भाई, वो अपनी फोटो छपवाने गए थे, अपनी खबर दिखाने गए थे। चंद्रयान 2 में पहुंचे, के शिवन की फोटो नहीं आई, मोदी जी की फोटो आई। You're not answering my straight questions, Mr. आईपी सिंह जी। आप मेरे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे। That's all the time I have, sir. We need to take in a word from Sunil Singh of the JDU as well. Mr. Singh, what do you make of this? Mamata Banerjee says wherever the sinner goes, omen follows, in a reference to Prime Minister Narendra Modi, once again linking it to the World Cup final clash at Narendra Modi Stadium. Normally, we are of the principle that sports should not be mixed with politics. But as for calling names in a political leaders, I think this was started by Prime Minister Narendra Modi. He has taken the Indian politics to a downward low. He has called Rahul Gandhi Murkhon ka Sardar. And that is where the thing starts. One should be very choosy in the choice of words they choose in political and social life. But then Prime Minister Narendra Modi has... There's also Maut ka Saudagar, sir. Yeah, but then you do... There's no end to this. But why are we bringing in cricket and all of this is my only question. Cricket, any sports which should not be mixed with politics. Then why this thing is happening? Can you imagine? If I call you names, you will call me names. And this was started by Prime Minister Narendra Modi. He has taken the standard of Indian politics to all-time low. He calls Rahul Gandhi is a senior parliamentarian. He can be a would-be prime minister. He is a senior leader. You can't call him Murkho ka Sardar. And that is where the thing starts. If you call Murkho ka Sardar, the Congress people will... Again, Mr. Sunil Singh, my question is only why are we undermining the capabilities and the talent of our cricket team, of the men in blue, in politicizing cricket in the manner in which it is being politicized days after India unfortunately lost that final match after having won 10 consecutive games in the World Cups. Many thanks for speaking to us. We also have Manikam Tagore of the Congress joining us on the phone line. Mr. Manikam Tagore, first came the Panoti jibe and now the Papi jibe from Mamata Banerjee. It's very important to note that we lost the World Cup and everybody has feelings because cricket is a loud sport in India and many of the fans are upset with it. Therefore, reactions will be coming in different quarters. Therefore, it's a very sad part for all of the Indian fans that the team which won 9 matches could not win the last match. And there are reasons for it, and one of those reasons, the general feeling was that of presence of politicians to take political credit and others. Therefore, these kind of things will be there.
political. Mr. Manickam Tagore, do you seriously feel that, the playing 11 were focused on who's present in the audience rather than their game, sir? Is that what we want to bring down this game to? No, who against the ICC rules, who enter into the dressing room is also an issue, against the ICC. Sir, the game was played by then. India lost by then. All of that happened after the match, sir. So it could have in no possible manner affected the game of, the top 11. You have to understand this, ma'am, that when the match fixing scandal happened in 2000, ICC has brought out a rule that no other players other than the players and the staff, we are not even the ex-players of the team. And after the game only, after or before game, that's a different story. Because the match fixing story happened with these kind of, without any rules. Anybody can enter into the dressing room. Again, Mr. Tagore, that's not a straight answer to my question. I'm afraid, our playing 11, everyone who was associated with the World Cup journey from India would be so very hurt in seeing the kind of politics that is being played over this issue today, played over their loss. Unfortunately, that happened only in the finals. Thank you for speaking to us. But let's